डुप्लीकेट कर दो उसको, तो बोलेगा स्टैंड की जगह ना। Basically, we'll be concentrating on this, the mental status part of it. So, I think we start with the queries because now Dr. Sanjeev and Dr. Ghani sir is also there with us. And what are the various issues people face in mental status examination? We'll not keep it as a lecture kind of a thing. So, और ही करते हैं. So, बताएं. So, what are the queries, issues, journal appearance, which हम लोग शुरू करते हैं. So how a mental status examination starts? It's an equivalent of physical examination in neurology. So it's the most important tool for a psychiatrist or in mental health professional. There are a lot of psychology in terms also there. So basically how it starts, when it starts when patient, you actually observe a patient, and if the patient is entering into the scenario, it starts. What's an ideal seating arrangement for a mental status examination? So whether I'm sitting here, patient is sitting here with chair and facing you people, whether it's an ideal sitting arrangement, myself sitting here, patient is sitting here, and patient is looking at you. Myself sitting here, patient is sitting in front of me, looking at me. Huh? By the side. By the side at which angle? At 90-degree angles, or basically you have to give specific space to the patient, and the field should be blank. The field should be blank. There should not be distraction. If I'm facing a lot of audience, I'll be distracted. There should not be wall clock on the side where patient is facing. Maybe the clock can be at the side of where examiner is sitting, so that we can have a sense of time, but it should not disturb the patient. And most important thing in psychiatry is what? So patient is sitting there, on the left side of this table. The interviewer is sitting in this table. So is it an ideal scenario? So exit door should be on the side of the examiner, preferably. So if patient gets agitated, violent, you can have an escape route. I think हमारे OPDs में ऐसा है नहीं sir. Patient has an escape route and we don't have. Escape route washroom हो सकता है. So these things are very important. So distractibility रहेगा. Patient is already distracted by a lot of internal psychopathology. No problem होना शुरू हो जाएगा. General appearance हम लोग लिखते हैं physical appearance, appropriateness to age, body build, है ना, whether the patient is ectomorphic, endomorphic, mesomorphic, dress, the hygiene of the patient, grooming, patient is not in touch with surroundings, whether patient is conscious. हम लोग touch with surroundings में कहते हैं. Patient is conscious enough. If patient is not conscious, we say, or unconscious patient or arousability कम है, patient is having a head trauma and we are feeling the patient is having fluctuating consciousness, from touch with surroundings are usually the. Generally in psychiatry, in psychosis, we say if patient is conscious, patient is in touch with surroundings. Eye contact, what is an adequate eye contact? कितना होता है? This mental status examination, each heading has been taken from CTP third edition. So it is not of a specific institute. It was copied in the CRF, so we were following it. But it is actually from, word by word, they have taken it from CTP third edition. Subsequently, CTP has not given CRFs. That was the last edition when they gave CRF. So adequate eye contact is, they say roughly 30% or 40% of the interview patient आपसे eye contact बुला रहा है, so it is adequate. Otherwise, it is inadequate. Then what are the facial expressions, and then the posture of the patient. So I think general appearance कैसे लिखना चाहिए patient? आप तो बताओ.
So how it should be written? I think we can equally share our experiences, since this is not a lecture kind of a thing. We want to be, they came up with let us go for very basic series. So general appearance should be written in a, like where actually by just listening at your description, we can add a picture or an we can actually imagine the person, how the person is looking. So it depends upon your vocabularies, the how will you actually describe a person. So that is about the physical appearance and all these things, appropriateness to age. At times we'll have a 40-year-old lady, which will be, you know, the documented age will be around 30 or 25. देखते पता चल जाता है कि नहीं ये तो ज्यादा है या ये कम है स्टेटेड एज से, तो वहां पे आपको अपना इंप्रेशन देना है. Then build, है ना, build can be subjective. A Punjabi build vis-a-vis a Odia build, so you can have a subjectivity. So when there is an, तो वहाँ पे subjectivity का then there is an error. आपके लिए कोई एक, है ना, thin build होगा, शायद दूसरे के लिए वो moderate build हो सकता है. Then grooming, है ना, grooming and hygiene, how groomed the person is, बाल कैसे बनाए हैं, then whether nails are dirty or not, whether the person is wearing clothes, properly pressed clothes or not, or disheveled clothes है कि नहीं. Sir, और कुछ इसमें से important? Then facial expressions throughout them. And एक heading लिखते थे हम कि mental status examination duration कितना, whether how much duration did you interview the patient. A specific interview की हम बात करते हैं, तो mental status examination, whether you have interviewed patient for 15 minutes, 20 minutes, will actually give us a clue also कि how much time you assess the patient. कभी कभी होता है आपने 5 मिनट ही देखा है तो आप क्या असेसमेंट शुरू कर पाए. Maybe 1 hour of interview and you didn't get any psychopathology, then we will मतलब we might get clues about every other thing. ठीक है. Attitude क्या होता है? Patient is drowsy, lethargic, not amenable for mental status improvement. हाँ, और not amenable for these parts of the interview. कभी कभी पेशेंट थोड़ा लेथार्जिक होता है, थोड़ा ड्राउजी होता है, आपसे कम्युनिकेट कर पाता है बट डिटेल में नहीं कर पाता है, तो जितना कम्युनिकेट करता है आप शुरू में ही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में लिख दें. पेशेंट अनकोऑपरेटिव है तो क्या करेंगे? पेशेंट इज इन, हाँ नहीं, पेशेंट इज अनकोऑपरेटिव फॉर द इंटरव्यू, पेशेंट इज हैविंग कैटाटोनिया, तो पेशेंट इज इन म्यूट स्टेज, एंड इज हैविंग स्टूपर, इज नॉट एमिनेबल फॉर अ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. तो फिर क्या करेंगे? मेंटल स्टेटस एग्जाम में पूछा गया था, Kirby's method होता क्या है? The reaction to the surroundings, the stimulus. उसके I think there are 10-12 headings. वो है आपके पास Kirby's method? तो 10-12 headings हैं, वो सारा का सारा आपको फॉलो करना है. हाँ उसमें भी काफी हैं. अगर कैटाटोनिया है, मतलब an example I'm giving of non-cooperative patients. Many times they'll come ना, patient is not cooperative, है ना, MSc कर नहीं पाए, तो वहां पे फिर अगर इन केस नॉट कोऑपरेटिव पेशेंट है तो एटलीस्ट आप किर्बीज से बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन लिख लें. किर्बीज इज नथिंग बट अ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन. मतलब ठीक है. हाँ, जो दिख रहा है वो लिखेंगे, बट बाकी तो सब हिस्ट्री में आ जाए. पुअर सेल्फ केयर हैज इंप्रूव्ड इन हॉस्पिटल्स. जैसे in institutes, so they will call barbers, they will actually ask them to wash around, cut their hairs, make them. So grooming has improved as per history. Basically monitored grooming होगी, तो आप mental status में लिखेंगे उसकी better grooming है, बट आपको पता है कि monitored grooming है, पहले नहीं थी, तो आप उसे diagnosis से अकाउंट्स पे लेंगे. हाँ, अगर ग्रूमिंग अच्छी है ना, विद सपोर्ट है, प्रॉब्लम है विद सपोर्ट. आई थिंक हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं.
right? Usually mental status में होते हैं very well. Then at a night, history to come that he's taking care of himself. ये हॉस्पिटल स्टे में ही has been हॉस्पिटल स्टे के जो हम नोट्स लिखते हैं उसमें हम लिख देंगे कि भाई इनका so that is why Dr. Shaily's point is very valid. इसीलिए तो mental status का एक subsection becomes very important. कि grooming has improved with assistance, it will give you a diagnostic clue also. So attitude क्या होता है? How you define attitude? Behavior of the patient. हाँ, उसका एक definition भी है. So हम लोग इसको काफी एडजेक्टिव्स में कहते हैं कि कोऑपरेटिव है, अनकोऑपरेटिव है, अटेंटिव है, एंजाइटी का पेशेंट है, पेशेंट इलनेस एंजाइटी का है, तो व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू विल गिव, patient might be very very attentive towards it, and at times very OCD patients will come who are very very sticky, so they'll try to gain so much of your attention that it will be little tiring for the examiner. Evasive and guarded, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the difference? बताओ. Limited information. अच्छा. And guarded, वो तो पहले भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तभी तो शिफ्ट कर रहा है अभी. To the extent that example is that there is around the तो बेसिकली और कोई बेटर एक्सप्लेन कर इवेसिव एंड गार्डेड श्रीनिवासन? नहीं तो इजी, ये तो वो है. सो गार्डेड तो नहीं पूछा पहले मोड में है, उसके साइकोटिक सिम्टम्स के हम पूछ रहे हैं, वो मना करता है. जब तो थोड़ा सी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक जाना वो मना करता है. सिम्टोमेटिक मतलब मूड बोलता है, फिट को क्या है, सब कुछ बोलता है, लेकिन सिम्टोमेटिक इस रिलेशन के बारे में पूछेंगे, आरसीएस के बारे में नहीं बोलते. I think he is correct, but when you interview a guarded patient, you actually will feel कि whether he is harboring any psychopathology. History में जो दिया है वो सब सही है कि नहीं है, because then he will actually have a wall where he will not allow you to actually sneak peek. But evasive वाले आपको अंदर आने देगा, फिर they will push you out. Then he'll allow you in, then he'll push you out. So basically आपको पता चल जाएगा कि हाँ, there is something, but he is not ready to share the experience, either because अभी rapport build up नहीं हुआ है, या patient is not cooperative, or there is too many people around, so you need to interview patient in person. तो ऐसे patient का करना क्या होगा? मतलब evasive attitude है, guarded है, आप बहुत patients के बताते हो ना, evasive है, guarded है, तो आपको रैपो कैसे एस्टैब्लिश? रैपो के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ये साइनॉप्सिस में दिया हुआ. पॉजिटिव रिलेशनशिप, हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप, और बेसिकली एम्पैथी होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, है ना. देन यू नीड टू स्पेंड टाइम विद द पेशेंट, देन यू नीड नॉट इमीडिएटली जंप स्पेसिफिकली इन अ गाइडेड पेशेंट टू psychopathology. Always go with neutral topics, ask about his habits, his likings, his dislikings, and then go through this. Then maybe he'll share. I think sir बताएंगे. One of our patient in CIP, 6 महीने बाद, I was looking after a ward. After 6 months, that patient told me about the psychopath. And then वो पहले chronic patient थे. When I took over him, so he was not ready to share anything. And I should take him for a walk, every evening, and for maybe half an hour or something, talking about neutral topics. After 6 months, he told me, मुझे आपको एक बात बताएं. Because when I actually felt, ये अब safe है, और ये मुझे जान गए हैं, या I am totally confided. इसीलिए it is not, कभी-कभी आप बस patient आते हैं, third, fourth, fifth admission, you know psychopathology, history से मिल रहा है. That doesn't mean कि patient is fine, or patient is not harboring any. So the Mr. Thakur patient to admit with, we felt कि कुछ नहीं है, but there could be some psychopathology. He might be because he was guarded. guarded patients in way में
talk on neutral topics. If they think that that information is not pertinent to them, they will talk about politics. If they're neutral topics where they think there is a difference, like how they have the question, you think are neutral or no, they think that it's not a big. And suddenly when you come towards them, then they will become bad. Like now they're talking about basic questions, they are like all the time they're on a high guard. Even like you ask questions about say general knowledge, they will say resistant to even answering them. You will be guarded towards like personal or guarded towards relationship. Sometimes, like for example, patients, it is not only psychotic patients. For example, somebody is having marital problems, he's telling everything. Suddenly you talk about marriage and he becomes wrong. He is not willing to talk about his relationship. So in certain spheres he can be guarded. Certain spheres he can be withholding. Substance abuse patients, they will be withholding information regarding their intake. So that way, the evasive patients are more and psychotic. And I remember a mother of a psychology senior. She came and she was the daughter shared to me everything. Grossly paranoia, history full of paranoia. Auntie ji came and everything was very good, smiling, talking. I am fine. Why they are giving me medications and all? And I think 4 or 5 months have gone. She has not discussed even an iota of any problem related to her psychopathology. But everything is very fine. She'll come here, smile, shake hands, everything. So guarded. And but जैसे ही उनसे direct question करते हैं, there is absolute denial of any presence of any abnormality. So that is how a guarded patient will come to you, and then the history becomes very important. And जितने sources history मिल सकती है, it becomes very important. Then suspicious, you can see then patient जब active paranoia में या new onset paranoia में paranoid schizophrenia का onset होता है, patient might be, you will see that perplexity, that suspiciousness, वो scanning the environment, पीछे मुड़ के देखता है, इधर उधर देखता है, distractibility होती है उस समय, so आपको पता चल जाता है कि suspicious attitude है, and suspecting your intentions. because आपसे पहली बार patient को मिलवाया जा रहा है, new onset psychopathology है, patient is paranoid about the whole surroundings and आपके सामने लगे तो then patient might have suspicion towards you. कभी कहते हैं ना patient आप क्या कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं, इनसे क्यों बोल रहे हैं, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, so like that. Hostile, so it is explainable. Manner of relating क्या होता है? And were you also using the same headings? So manner of relating. Basically, it is part of the behavior. Basically, how you actually relate to your surroundings. Then whether you relate to your surroundings, relate to the interviewer in a relaxed manner, or you are tensed, or you are over familiar. Over familiarity क्या होता है? तो manner of relating अगर over familiar है तो rapport is established with difficulty या easily. So easily. तो ये contradictory statements नहीं देने कि manner of relating तो tense था, rapport was established with ease. So कभी-कभी it doesn't go in sync. या rapport was established with difficulty या not established. Manner of relating was over familiar. So that's आपको common sense थोड़ा सा लगाना पड़ेगा. Then manner of relating was aggressive, disinhibited, है ना? तो disinhibited and over familiar में क्या फर्क है? What is the difference? So disinhibited is basically over familiar is patient will not take any time and will be very impressed or will get easily friendly with you, and will confide in you, in very quick time. And basically it changes when you are serially interviewing someone. Manner of relating बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप किसी से चौथी पांचवी बार बात कर रहे हैं. Challenge is documenting it for the first time. The first time आप interview करते हैं तो challenge आता है. Disinhibition is basically patient taking off his clothes, or disrobing in front of the examiner. उस तरह का disinhibition. एक head trauma के patients आते हैं, तो disinhibited then they'll quickly grab you or they might be a little hostile. तो वहाँ पे उस sense में हम disinhibition कहते हैं. और withdrawn, like maybe catatonic patient or depressive
psychosis patient can be withdrawn. So in continuity of this, the rapport is established easily with difficulty or not established. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटरव्यू में rapport is established, next interview patient is offended by something, then you might not strike the same target with the patient. एक बार establish होगा तो हर बार होगी ऐसा नहीं. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? तो क्वेश्चंस थे ना, फिर तो हम लेक्चर फॉर्म में आ गए. So motor behavior, हम लोग साइकोमोटर एक्टिविटी लिखते हैं, which is a wrong thing. Psychomotor activity is psyche plus motor. Psyche is assessed not. Psyche is how psyche is assessed by the help of speech. तो speech तो हम लोग separate heading देते ही हैं. So actually we should write motor behavior. ठीक है, in exams it is very important. So motor behavior में it is normal, hyperactive, inactive, aggressive. Any movements, myoclonic movements आ रहे हैं पेशेंट को, jerks हैं, कोरिफॉर्म एक पेशेंट हम लोगों ने देखा था, कोरिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इट शुड बी एस्टैब्लिश इन मोटर बिहेवियर और आपके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सेपरेटली है. अगर मूवमेंट्स हैं, पोस्चर आपका जनरल अपीयरेंस में आ जाएगा, फिर आपके मोटर बिहेवियर में कैटाटोनिक फीचर सारे के सारे आ जाएंगे, है ना. कैटाटोनिक एग्जामिनेशन, फॉर्मल कैटाटोनिक एग्जामिनेशन आप डॉक्यूमेंट अलग से करेंगे और आपको बताया जाएगा तो आपको करके बताना पड़ेगा. ठीक है, फीचर्स आप इसमें लिख सकते हैं. हेलुसिनेटरी बिहेवियर क्या होता है, ये इंटर्न्स के लिए इंपॉर्टेंट है. हेलुसिनेटरी बिहेवियर, you know, when patient is muttering and smiling to self, you know, and scanning the environment, and it appears as if patient is talking to self. This is hallucinatory. तो है ना, then आपको दिख रहा चल जाएगा कि कहीं ना कहीं engaged है patient किसी ना किसी पर्सन से कन्वर्सेशन में, बट वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस चीज को. देख के आपको पता चल जाता है कि हेलुसिनेटरी बिहेवियर है. इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इसमें आ जाएंगे, ट्रेमर्स, डिस्टोनिया, डिस्काइनेसिया, कोरिया, एंसिटोसिस. आपको ये फिनोमेनोलॉजिकल डिफरेंस पता होने चाहिए कि व्हाट इज कोरिया, व्हाट इज एसिटोसिस, डिस्टोनिया, ट्रेमर्स एंड डिस्काइनेसिया. ठीक है, तो ट्रेमर्स और डिस्काइनेसिया सेम होते हैं नहीं होते, फिर हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे. बताओ. ये लोग सर ये सारा बेसिकली कंफ्यूजन लेके एग्जाम के पहले आए. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एनी कंफ्यूजन इन दिस? हाँ, ट्रेमर्स क्या होते हैं? शेकिंग. शेकिंग तो कॉमनली यूज्ड टर्म. कॉफी भी शेक होता है. Alternative rhythmic, है ना, contractions of agonist, antagonist, है ना, giving you a rhythmic movement to and fro across the joint. That is a tremor. Dyskinesia क्या होता है? Axis of हाँ, along the axis. की writing movement तो ये अब ये सब पढ़ना है तभी तो आप बता पाएंगे. तो पेशेंट हमें ये नहीं है कि अगर कोई भी अबनॉर्मल मूवमेंट है वो न्यूरोलॉजी वाले, इट हैज टू बी मेंशन्ड इन द मोटर बिहेवियर कंप्लीटली थ्रू आउट द मेंटल स्टडीज एग्जामिनेशन. देन स्पीच सर यू हैव टू हेल्प अस. स्पीच इंटेंसिटी क्या होता है? लाउड है कि नहीं है. देन टोन. स्पीच की टोनैलिटी होती है, क्वालिटी होती है बेसिकली. हाँ, thrill tone, हाँ, high tone, low tone, हाँ, female tone का step tone. so pitch है ना, the female voice will be of different tone than a male voice. Male की little hoarse voice होगी, है ना, thick voice होगी. So that is tonality, the quality of speech. Tone हो गया. Then basically tone and quality will remain same. आप same adjective में सब बोल सकते हैं. prosody, हाँ, speech is prosodic और not prosodic, हम ऐसे बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो इन्फ्लेक्शंस हैं हमारे, जो हम लोग एक अल्फाबेट पे एम्फेसिस देते हैं, एक पे नहीं देते हैं, कभी ज्यादा बोलते हैं, कभी कम बोलते हैं. सो आवर स्पीच इज प्रोसोडिक.
और स्पीच एपिसोडिक हो सकती है, किसी को एंटीसाइकोटिक्स मिल रही है, एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप देखोगे सारा मस्कुलेचर उसका स्टिफ पड़ा है, तो उसका टोन सेम रहेगा, सेरेब्रल डिसऑर्डर्स में टोन सेम रहेगा, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि स्पीच हैज बिकम एपिसोड। रिएक्शन टाइम, क्वेश्चन पूछने पे आंसर आने का टाइम कितना होता है, अब क्या ज्यादा है क्या कम है सब्जेक्टिव होता है, बट डिप्रेशन में बहुत पेशेंट टाइम ले रहा है, क्लियर कट है तो आप बोलेंगे इंक्रीज रिएक्शन टाइम, मेनिया वाला तुरंत आपके क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर दे रहा है, ओसीडी में भी ऐसा होता है। बेसिकली आप देखो कन्वर्सेशन बहुत फटाफट चलती है ना, पेशेंट इतना सारा बोलना चाहता है, इतना जल्द बोलना चाहता है, पेशेंट विल टेक वेरी लेस रिएक्शन। सो स्पीड, स्पीड ऑफ द स्पीच, कितनी आप तेजी से बोल रहे हैं, स्पीड इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? हाँ, इन मेनिया प्रोलेक्सिटी ऑफ स्पीच होती है, इसमें आपका वो काउंट करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट, कितना होता है, कितना होता है 150 वर्ड्स पर मिनट, बट काउंट तो करते नहीं है, इसीलिए तो कैसे कहते हैं कि प्रोलेक्सिटी है, डिफिकल्टी इन इंटरप्टिंग। हम कहेंगे आप जरा 2 मिनट के लिए एक, एक 2 मिनट के लिए आप कुछ मत बोलिएगा, तब तक हम इनसे बात करें। पेशेंट इफ यू आर एबल टू इंटरप्ट, maybe prolixity is not there. Then ease of speech, how easily patient is able to speak, or the speech, ये आपके aphasia में problem हो सकता है, patient might not have that ease of speech. Relevance, is it relevant to the topic of question asked? Coherence, coherence मतलब पूरे speech sample का throughout the interview are you able to derive any meaning of it? तो जब schizophrenia, deficient schizophrenia, then there is a lot of intermixing of themes, तो speech can appear incoherent। अब बहुत ज्यादा नहीं देखते ना सर हम लोग फॉर्मल फॉर्म, इनकोहेरेंट स्पीच में बिल्कुल मिक्सिंग हो गई, क्यों नहीं देखते वो? एनी रीजन? तो पेशेंट जैसे ही सिम्टोमेटिक होता है इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाता है, दैट यू यूज्ड टू सी इन क्रॉनिक पेशेंट नॉट रिसीविंग ट्रीटमेंट, है ना, पेशेंट इज डिटेरियोरेटेड, फॉर्मल डिटेरियोरेशन आ गया, अब आता ही नहीं, अब तो प्राइमरी केयर लेवल पे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल जाता है, बहुत कम हो गया अब इंडिया में। गोल डायरेक्टेडनेस मतलब स्पीच इज गोल डायरेक्टेड और नॉट, तो ये मेनिया में क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में गोल डायरेक्टेड होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता, इट रीचेस द गोल पक्का, फ्लाइट ऑफ आइडिया। एंड इसमें सर्कमस्टेंशियलिटी में it ultimately reaches the goal, but there is no directedness in thinking in flight of ideas। तो जनरल डायरेक्शन होता है कि हम कहाँ एक स्पीच को ले जा रहे हैं, वो लॉस हो जाता है। सो फ्लाइट ऑफ आइडिया को तभी माइल्ड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बोला था नैन्सी एंडरसन, टीएलसी। प्रोडक्टिविटी भी ऑलमोस्ट, तो स्पीच इज ओवर प्रोडक्टिव, है ना, और द स्कैंट स्पीच बोला ही नहीं। मैनर ऑफ स्पीच क्या होता है, मैनर को कैसे, क्या एडजेक्टिव हम बोले, तो जितने भी एक्टर्स होते हैं इनकी मैनरिस्टिक स्पीच, they 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 have their own style of talking, like Shah Rukh Khan or other celebrities. If someone will speak in a very stilted way, in a very idiosyncratic way, a very abnormal way, तो कहते हैं इसकी मैनरिस्टिक स्पीच है, इसकी idiosyncratic अपनी एक स्पीच बोलने का तरीका, that will not fit into normal types of conversation, तो उसे मैनरिस्टिक स्पीच कहते हैं। तो स्पीच इज मैनरिस्टिक और नॉट मैनरिस्टिक। वो एबनॉर्मलिटी में भी आप कह सकते हो, नॉर्मलिटी में कह सकते हो। स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट है, बेचारा गांव का है, बट वो अचानक से साइकोस में चले गया एंड ही इज टॉकिंग इन अ वेरी इडियोसिंक्रेटिक मैनर, है ना, ऐसे स्पीच बना के बोल रहा है, तो यू कैन से कि अच्छा पहले से बोलता था नहीं बोलता था, तो यू कैन से मैनरिस्टिक है। उसकी वो नेचुरल स्पीकिंग स्टाइल भी हो सकती है, वो भी मैनरिस्टिक स्पीच हो सकती है। देन आल्सो मैनरिज्म होता है क्या, मैनरिज्म क्या होता है ये सोचना पड़ेगा। इंटर्न्स सर, मुझे लग रहा है इंटर्न्स तो सब सो वो मैनरिज्म का जो डेफिनेशन है बेसिकली वो तो एनीथिंग व्हिच इज गोल डायरेक्टेड, है ना, एंड स्पॉन्टेनियस, तो बेसिकली वर्बल और मोटर एक्टिविटी कहते हैं, और वो इडियोसिंक्रेटिक होती है, हर किसी की अपनी अलग होती है।
तो आप लोग देखोगे तो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे, आपको अपने वर्क प्लेस में मिलेंगे, तो दे हैव देयर ओन मैनरिज्म्स, तो उनमें हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। डिविएशंस क्या होते हैं? तो स्पीच डिविएटेड क्यों बोलेंगे हम, फिर स्ट्रीम में भी नहीं ले जाएंगे। डिविएशन में क्या आएगा? आई थिंक ये कमेंट, बट इसको फिर यहाँ नहीं बोलना है, हाँ इसको डिलीट करके ना इसे स्ट्रीम में ही बोलना ज्यादा बेटर है। हाँ डिविएशंस पा जाएंगे सर, इसलिए राइमिंग पनिंग तो एक तरीके से क्लैंग एसोसिएशंस हो गए, वो तो एसोसिएशंस ऑफ स्पीच हो गए। तो वो तो आप उसको वर्बेटिम लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि वो स्पेशली यहाँ राइमिंग है या पनिंग है, और फिर ये क्लैंग एसोसिएशन है या एसोसिएशन बाय साउंड है या बाय मीनिंग है, और ये फिर फ्लाइट में जा रहा है। तो पन क्या होता है सार्थक? फिर बताओ, जल्दी बताओ। पनिंग अभी तो राइमिंग, पन आप पता तो नहीं है। हाँ हाँ, और एक एग्जांपल भी दो पन का। नोटास था। तो ये तो सब पूछना होगा ना, इतना टाइम से चल रहा है ये मेंटल स्टडी एग्जामिनेशन, हम लोग फ्लाइट ऑफ आइडिया की बात करते हैं, उसमें एसोसिएशन की बात करते हैं, एसोसिएशन बाय साउंड और बाय मीनिंग, क्लैंग एसोसिएशंस, है ना। तो ये तो राइमिंग्स पनिंग तो उसी में आते हैं, ये तो पूछना ही नहीं पता होगा। एलिट्रेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, इसलिए पता है। बिट बिटर बिटर बेस्ट क्या होता है? बैटी बिटर बिटर बेस्ट क्या था वो, किसी को पता है? हाँ, व्हाट इज दिस? दिस alliteration. First alphabet is same, so it's an alliteration. And then there is something known as consonants. Consonants होते हैं, क्या क्या होते हैं consonants? हैं? Consonants क्या क्या होते हैं? Example दो। अरे consonant का example दो। हैं? Consonant नहीं पता है? अरे इंग्लिश वाले consonant, A E I O U, सो काओ माओ जाओ टाओ पाओ काओ खाओ, तो ऐसे जब पेशेंट्स बनाते हैं तो जो बीच का अल्फाबेट होता है अगर वो कॉन्सोनेंट हुआ तो देन दिस इज कॉन्सोनेंस, इसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। तो पहला अल्फाबेट अगर सेम है तो एलिट्रेशन, बीच का अल्फाबेट अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंस। बीच का अल्फाबेट अगर सेम आ रहा है पूरे वर्बेटिम में और पेशेंट मेनिया में उसे बता रहा है तो आपको भी बड़ा मजा आ रहा है, बट वो कॉन्सोनेंट छोड़ के वोवल है तो इट बिकम्स एसोनेंस। ये तो सब रेनन मार्टिन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पन का एग्जांपल दो। तो जब भी दो शब्द जो बेसिकली सिमिलर साउंडिंग है, दे आर यूज्ड इन सेम कंटेक्स्ट बट इन एन ह्यूमरस वे, सो दिस इज नोन एज पनिंग। तो मेरी सांस चली गई तो मुझे सांस आ गई, है ना। तो सांस इज इन वन कंटेक्स्ट इट इज मदर इन लॉ, अनदर कंटेक्स्ट इज माय ब्रेथ। वो जब चली गई तो सांस आ गई। और पेशेंट ऐसे ऐसे पन इस्तेमाल कर रहा है तो सिमिलर साउंडिंग है बट उसका मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है। So I think 9:45 we'll continue the same, तो जैसे कोई बीच बीच में पैचअप होगा। हाँ इसमें speech और thought में there is like you use one format for one mental status because each format will cover and there are changes, like some places they will cover this in the thought, somewhere they will cover the speech, somewhere they will cover under general appearance behavior, somewhere they will cover different things, but you follow one thing totally, that is why you don't pick one place from, for example, anything speech in different mental status formats. स्पीच में जो कुछ स्पीच में कवर करते हैं तो कवर करते हैं, बट सर इज राइट, जो ये जो पनिंग, ये जो क्लैंग है या ये जो टाइमिंग है, ये सब आप थॉट में जब सैंपल लिखते हैं वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो स्पीच की अलग क्वालिटीज है वो यहाँ पे एक्सप्लेन, उन सबको आप थॉट में लेंगे। फ्लाइट ऑफ आइडिया आपका स्ट्रीम में आता है, तो इसलिए आप कंटेंट में उसका सैंपल लिख के वहां पे सब एक्सप्लेन, तो आपको स्पीच में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थॉट में भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, डबल डबल। एंड यस देयर आल्सो वहां पे एक्सेलरेटेड स्पीच है,
ना, स्ट्रीम है, एक्सेलरेटेड स्ट्रीम है, स्लो कंटेंट तो वहां पर प्रोडक्टिविटी आप स्पीच में बोलेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रीम में बेसिकली स्पॉन्टेनिटी वॉल्यूबल है कि नहीं है, कितनी वॉल्यूम ऑफ स्पीच है, एक्सेलरेट मतलब फास्ट है कि नहीं है, जल्दी जल्दी बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हाँ क्या होता है बताओ? पॉवर्टी ऑफ स्पीच इज समथिंग कि हमने पेशेंट से बात करी एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स एलिसिटेड वाज वेरी लेस, है ना, तो बेसिकली हम लोग उससे फिर हम लोग उसकी इसकी स्ट्रीम पे कमेंट कर दिया पॉवर्टी ऑफ स्पीच है। यू आर सेइंग कि अच्छा वो प्रोडक्टिविटी तो सेम हो जाए, productivity is covered. पॉवर्टी Extremely decreased productivity Decreased is poverty. like very low, poverty is like very low productivity, very economical need. आप उसे यहाँ पे ना एक्सप्लेन करें, वहां कर दें चलेगा, वहां पे कर दें यहाँ ना करें चलेगा, कहीं ना करें नहीं चलेगा। वहां पे आप कहते हैं प्रोडक्टिविटी इज नॉर्मल और यहाँ कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच प्रेजेंट, तो नहीं चलेगा। तो आपको वहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपसे एग्जाम में पूछा यू नॉट कमेंटेड ऑन द स्पीच पॉवर्टी, तो इसे कि मैम हमने स्पीच में बता दिया था, बट स्ट्रीम में जनरली व्हेन दे हैव मेंशन्ड दिस इज दे हैव टेकन फ्रॉम सीटीपी एंड फिश सेल लिया, तो यहाँ पे मैं पूछ सकता। तो चलो ये फिर हम लोग इफेक्ट पे और थॉट एंड ये परसेप्शन पे विल कम इन लेटर सेक्शंस। कॉग्निशन भी बचा हुआ है थोड़ा सा, विल कम इन लेटर सेक्शन एज सोन वी गेट टाइम, so this is little time take. Sir, One thing I would like to add, when you do a mental status, you do an interview, whole interview, okay, take notes and then write the whole mental status plan. At the end of it, the time you will take it to write general appearance and behavior. At the end of the interview, the patient may become hostile, or you have already checked perception, you are checking for insight, or you're checking for like abstract thinking, and suddenly you will say that start hallucinative behavior, or give some content that is suspicious. So you do the whole interview, then you write everything together. Okay, don't like in examination mostly it happens. Like students they keep on writing, and sometimes they will be having thought content because so prior information bias bhi hota hai. And the mind is so fixed that you yourself are giving history that is evident of suspicious intent, but you have it in someplace else. So in mental status, it's not that at that time you're asking, that you're taking history with it. The whole information from the patient is put in the mental status. Okay, that interview. So you write it, and if you see something, so वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्लस एग्जाम में जो आप करते हो वो आप 3 साल में कभी नहीं करते। क्या आप 3 साल में कोई किसी का बताया केस में प्रेजेंट करते हो? नहीं करते, तो एग्जाम में क्यों करते हो? एग्जाम में यू आर एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड टू अ बायस व्हिच यू हैव नेवर एनकाउंटर्ड इन लास्ट 3 years, इसलिए इतना हॉच पॉच। या तो फिर अभी से करना शुरू करो, किसी का बताया हुआ केस प्रेजेंट करो तो आपका वो बायस से आप एडजस्टमेंट करना सीख जाए। अदरवाइज वहां पे तब भी मत पूछो, देयर इज नो नीड। नो, एग्जाम में विल कम एंड 5 minutes इंटरव्यू करता है तो थोड़ा सा देखने के लिए कि केस में दम है कि नहीं है, एंड देन दे एक्चुअली सी योर अप्रोच व्हिच गेट्स मैसिवली क्लटर्ड अगर आपको पहले से ही बता दिया जाए सारा। examiners do not match the diagnosis of the student with the diagnosis of the examiner itself, or has been told to the examiner. They focus on the approach and the internal consistency of the history. Your history should be in sync with your mental status, and your mental status finding should be in sync with your diagnostic foundation. That should be there, and you should be able to defend whatever you are saying. It is very difficult to defend something that you yourself don't believe. You see a patient, your idea is that this is the patient psychotic, somebody has told it is schizophrenia, then you will try to manipulate things about it, and then you are not able to और प्रॉब्लम क्या है कि आप एग्जामिनर्स दे गेट वेरी हैप्पी इफ यू कम आउट विद सम डिफरेंट डायग्नोसिस व्हिच वाज गिवन रिटन एंड गिवन टू देम। एंड आपके जो सीनियर्स थे सब ने एक केस में इनसाइट वाज ग्रेड 4 बोला एंड दे वर मेकिंग फन ऑफ इट, व्हाई? बिकॉज वो इनसाइट ग्रेड 4 थी नहीं, और वो लिख के उनको दी गई, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी एक रेजिडेंट्स ने भी वही। सो माय पॉइंट इज कि जैसे आप अभी यूपीडी में केस लेते हो, आप वर्कअप करते हो, प्रेजेंट करते हो, इसी फॉर्मेट को एग्जाम में भी करना, वो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलने से कोई फायदा नहीं हो जाए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान देना है। These questions only will be asked. These only questions.
Like they will not be very different question from mental status diagnosis. So you have an answer, and as we are also here having some difference of opinion or there is no fixed source, at that time also they can be there. So the examiner will also know which are the things that are controversial, or you can say they have no fixed thing. But you should know. You should know the fixed answer. You should know definition. You should know the difference between like tremors, dystonia, dyskinesia. You should know the definition to give it there. Okay, to start with. Don't get stuck at GG care. Or don't presume that okay, this is a tedious answer. There is no well accepted answer for this, so it is difficult. You give the answer that you know. You give the answer that you know. Don't be afraid that this is accepted by some or not accepted by some. So this and fail safe is if you quote a text. So this is not a text. एंड इतना क्लटरिंग हो जाता है कि आप एक पेशेंट को 10 साल पहले अल्कोहल डिलीवर और अभी डायग्नोसिस में अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम करंटली इन डिलीजन बोला गया। सो ये क्यों बोला गया? क्योंकि आप पहले से वो सब जान लिए थे। अब एंजाइटी हो गया कि टफ केस मिल गया, ऐसा मिल गया, ऐसा केस रख दिया गया, उस एंजाइटी में मिस्टेक कर देते हैं। इट इज वेरी सिंपल थिंग। 3 साल में जो आप ट्रेनिंग ली है वो आपको बताना जाता है। एंड देन यू हैव टू कूल योरसेल्फ, काम योरसेल्फ, अच्छे से रेस्ट करना है। तो एंजाइटी को बिहेवियर से तो है, सारा पता कर लो कौन सा केस एडमिट हो गया, अरे उसमें ये भी निकल गया, अरे उसमें ओसीडी में निकल गया, स्किज़ोफ्रेनिया में निकल गया, हाइपरटेंशन भी है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी अवॉइडेड। Start reading theory from now. Because what happens is that you see that I have so much theory left, and in the later part you neglect clinical work and you focus on theory. So read theory from right now, cover the whole thing so that you have to revise it. Because at the end of the time, what happens is for the last 2-3 months, the students they neglect the case taking, history taking, and वो तो जैसे मसल डिस्यूज एट्रोफी होता है वैसे ही आपने जो काम करना बंद किया वो खत्म हो गया। वो आपके रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, and then you make blunders in taking simple history. So focus on clinical testing and right now start reading theory. अभी ज़्यादा focus theory पे होना ही और साथ में clinical होता कर ही रहे हो तो। So then सर ये टॉपिक जो से है नेक्स्ट सेक्शंस 2 और 3, so we would like कि सारी फैकल्टी रहे। I क्योंकि think सर that what we can do is like we can ask the students also to prepare one short, जैसे कि affect में 5 minutes they can present and we can pitch it. Sir, because everyone would otherwise teach them little different, right? So सब साथ में रहेंगे, they will also get the I guess that is that consensus is there that in our institute we do things like हमें इस बार एक केस नहीं खेलना चाहिए। केस मतलब पहले से पता हो कि आप जब उसे सिंपलीफाई करते हो ना, केस लिखना कॉम्प्लिकेटेड होता है, वाइवा उतना इजी करते हैं। yes, that is मेरे कलीग का स्किज़ोफ्रेनिया था, उसका वाइवा बहुत टफ था। मेरा केस उसका अजीब था, वो सब्सटेंस अब्यूज, पॉलीसब्सटेंस अब्यूज, पर्सनालिटी पार्ट, तो मेरा केस ऐसे बहुत डिफिकल्ट था। और मैं वाइवा वाज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। तो डिफिकल्ट केस रखना इज बेटर, और आप पहले से डायग्नोसिस करके जब उसे चीजें को फिट करते हो ना, तो एग्जाम में चिढ़ जाते हैं। देखो रियल लाइफ में केस क्या है? केस आपके पास कोई ओपीडी में आपको दिखाने आएगा, वो केस लेके थोड़ी आएगा, तो अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, केस तो कुछ नहीं होता है इस तरह का ना। तो अब उसके दिमाग में थोड़ी लिखा होगा ये इजी केस आएगा, इजी वाला आएगा मेरा आज का, फिर अब ये टफ वाला है और ये सर ने बहुत टफ रख दिया, ऐसा थोड़ी होता है। So you have to encounter all the challenges. and management also people with short symptom, difficult symptoms who start with antipsychotic respond very dramatically. On the other hand, straightforward like diagnosis is OCD. OCD is the easiest diagnosis to make and most difficult to manage. Very When I went to Agra, sir, cases were they deliberately kept very simple cases. We took a very tough exam. We took a very strict exam because the cases were very, very. Yes, then the basic question: what is obsession? The qualities of obsession that they will put them. If there is like the phenomenology is different, so they will. So the examiner is going to go in depth in everything, but your main thing is that what you have done in years, you will perform. It reflects that. That is will be your memory. So आजकल जो करते हो that is the most important. और वही सबसे अच्छा एग्जाम परफॉर्म करता है जो डेली खूब सारे पेशेंट. Daily you record mental status. Daily you have to record this. Every headline, everything. लोग कहेंगे इतना OCPD हो, है ना? Few of your seniors are very good in documenting. We used to stop them in mental status के जब छोटा कर. But the person will perform better in exam because then your working memory, your memory, your procedural memory will become better, and then anxiety आपको हिलानी पड़ेगी. At least you will not face any headache. क्योंकि Headache mental status like
the university examination. If these headings like mental status or misperception totally. So that is like a big blunder. Because when you get senior, Anxiety disorder, yeah. So when you go into seniority, you have a tendency to escape. होता है नहीं जूनियर से करा लिया काम, ऐसा नहीं करना है. जैसे जैसे एग्जाम पास होते हैं और काम करते जाओ. You will never feel anxious क्योंकि एग्जाम के पहले आपने इतना काम कर लिया होगा, इतने इवैल्यूएशंस कर ली हैं, कम से कम 20-30 टाइम्स आप स्टबन ब्लैक कर लो, है ना. मेनी टाइम्स आप वाइवॉक्स लगा लो, आप मेनी मेंटल स्टडीज एग्जामिनेशंस खूब सारे 20-25 कर लो, तो आपको फिर कुछ याद करने की या कुछ रात को पढ़ने की जरूरत ही नहीं. आपने तो कर लिया, आपको तो मेमोरीज में सब. and these skills, if you apply biomass, you get a patient of mania. Don't apply biomass, but you know what the things you ask. yes. Depression, you know what things you have asked. Like if you apply sleep scales, you know what things you have asked for sleep or OCD. So then you can take a better history and you can report better. What are the things like motor activity, etc. Whatever you, that is why you apply the skills, you will remember what to ask. Alcohol use or blood, you know what the drugs and drugs. There are daily applying those. और फिर टफ केस रखा जाता तो वी कैन डिफेंड यू नो केस वाज लिटिल टफ, तो एग्जामिनर भी कहता हाँ केस वाज लिटिल टफ, तो वो देन इट कैन एक्चुअली डिपेंड, कैंडिडेट नोज बेटर. सर ये एग्जामिनेशन वाला बन गया सर. ठीक, थैंक यू. Started time the night. By the time.